to stammer with ease without struggle. I mean, as you said, how struggle is different from speaking comfortably or using techniques. When we use technique, one of the purpose is to reduce the struggle. So that difference can be brought out. Yeah. So, so one way of thinking about the difference between stammering and struggle is that stammering is biological. Stammering is neurological. Stammering is genetic. It is in the body. It is part of the makeup of the body. Struggle is learned. So, a lot of what we do here, whether it is TISA or speech therapy of a certain type, we are trying to unlearn a lot of things that we have learned over the years. So hiding the stammer, avoiding the stammer, fear and anxiety that comes from hiding the stammer or avoiding the stammer, how to unlearn those kinds of things. And the answer is do the opposite, right? If you've been hiding it, show it. If you've not been talking about it, talk about it. और इस कॉन्टेक्स्ट में जो मनीष ने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था मॉल में, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझको वो बहुत अच्छा लगा. आई वॉच्ड इट लाइक 10 minutes ago. जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नो स्ट्रगल. इसको देख लें क्या थोड़ा सा 2 मिनट के लिए? हाँ, श्योर. दो आई मिनट थिंक के लिए इसको देख लेते हैं फटाफट. it's a very inspirational one actually that we can watch. हाँ 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 हाँ. We should not miss these submissions from somehow I have not seen it yet, but let Yeah. me quickly go to it. आपने मनीष आपने उसको सबमिशन फॉर्म में डाल दिया है ना? नहीं, अभी मैंने ग्रुप में डाला है. अच्छा, ग्रुप में डाला. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब ठीक है, मैं ग्रुप से उठा लेता हूँ उसको. ग्रुप में अगर है तो हाँ, ये रहा. बिल्कुल ठीक. क्या बात है. वेरी गुड. लेट मी शेयर द स्क्रीन. आप एकदम बन ठन के गए हो. एक मिनट. वैसे भी चूंकि आप दिल्ली में हो तो आपको तो फिर ध्यान देना ही पड़ेगा ना. अगर आप हर्बटपुर में होते तो शायद मेरी तरफ चले जाते निक्कर पहन के. एक मिनट. अब स्क्रीन पे आ गया? दिख रहा है स्क्रीन पे? मैं एक एनजीओ टीसा द इंडियन विजिबल नहीं, we can only hear the audio, not the video. अच्छा, ओके ओके. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. मैं अभी देखता हूँ इसको. क्या अब आ रहा है? मैं एक एनजीओ टीसा द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन का मेंबर हूँ. आपने अपने आसपास
स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, किसी पर्सन को सॉरी, मेरा बैंडविड्थ जरा स्लो है जरा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, मैं बार बार वो फ्रीज हो रहा है। सो ओके, बट यू कैन सी दैट मनीष ने कमाल कर दिया एकदम। टीसा की शर्ट भी पहन के गए हैं आप, टीसा का आपने बिल्ला भी लगा रखा है, और हाथ में माइक भी पकड़ा हुआ है। बहुत अच्छा बोला मनीष। ओवर टू डॉक्टर अमित। तो आप थोड़ा सा अपना प्रोसेस बताइए मनीष कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं मॉल में बोलूँगा और क्या बोलूँगा, और टॉक टॉक टू अस अबाउट योर प्रोसेस अ लिटिल बिट। एक्चुअल में ना, आज दिल्ली में एक कॉलेज के अंदर वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर क्रिस्प का प्रोग्राम था, और उसके अंदर डिसेबल पर्सन्स के स्टॉल भी थे। तो हमारा भी स्टॉल था उसमें, टीसा का। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ओके। तो वहां पर फिर मैंने लंच टाइम के बाद थोड़ा सा टीसा के रिगार्डिंग सभी को थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए थोड़ा, और वहां पर और भी डिसेबल जैसे ब्लाइंड या और जैसे और भी तरह के डिसेबल थे, सभी 14-15 स्टॉल लगभग थे। अच्छा। मॉर्निंग में 10-11 बजे शुरू हुआ था, शाम को 4-4:30 बजे तक था। तो मतलब काफी कंफर्ट जोन था। हम्म। तो आपने स्पीच प्रिपेयर की थी या ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू बोला था? नहीं, ऑन द स्पॉट प्रोम्प्ट बोला था। अच्छा। हाँ। तो यही तो दिस इज एन एग्जाम्पल। आप रूपर्ट स्पारे का वीडियो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा मनीष है, उसने उसने भी ऐसे करके दिखाया। आई थिंक इट वाज वेरी इम्प्रेसिव द फैक्ट दैट आप गए, आपने मॉल में बोला, इम्प्रॉम्प्ट बोला, दैट इज स्ट्रगल फ्री स्पीकिंग इन अ स्ट्रगल फ्री वे। So, uh, what I liked about what you said earlier when the video started with Rupert's Ira is that he took his own sweet time. And I think looking at it from a speech therapy standpoint, just from a very limited speech therapy standpoint, there is a big connection between language fluency and speech fluency. तो जब हम कोई भाषा बोलते हैं, किसी चीज किसी 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 के बारे किसी चीज के बारे में बोलते हैं जिसको हम सर्टेन नहीं है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, तब हमारी जो हकलाहट होती है वो ज्यादा होती है, स्ट्रगल ज्यादा होती है, क्योंकि लैंग्वेज फ्लुएंसी इंटरैक्ट्स विद स्पीच फ्लुएंसी। ये रिसर्च में काफी रोबस्ट फाइंडिंग है कि जितना लंबी अटरेंस होगी हमारी, जितना हम लंबा बोलेंगे, और जितना हम ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स बात बोलेंगे, मतलब कि मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, हमारी वोकैबुलरी जो होगी वो बहुत मल्टी सिलैबिक वोकैबुलरी होगी। तो जितना लिंग्विस्टिक कॉग्निटिव लोड ज्यादा होगा हम पे, उतना हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा अगमगाएगा। It will be a little shaky. So there's a connection between language fluency and speech fluency. So I was looking at the pausing behavior of this man, Rupert Ira, from that lens, because he took his own sweet time to think about what he wanted to say. He formulated the idea in his head before he got going. And the first sentence out of his mouth was, "I'm glad it's not a man, it's a woman." So he like turned it into a light-hearted moment. Everybody laughed. So, he gendered the conversation in that way, which is a nice way to do it. Um, and then he brought in further um, examples of improvisation through jazz and classical, comparing with all of that. All of that takes time thinking about it. It's hard to sort of formulate these ideas on the go.
सो इफ यू फॉर्मुलेट अहेड ऑफ टाइम, थोड़ा सा सोच लें क्या बोलना चाहता हूँ, किस टाइप से बोलना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो आई थिंक पॉजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ अ वे फॉर अस टू रेजिस्ट टाइम प्रेशर। हम लोग टाइम प्रेशर के ओर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो दिस इज वन मोर वे ऑफ रेजिस्टिंग द टाइम प्रेशर. Further ways of reducing struggle. So things that we can do ahead of time to reduce struggle, maybe a little bit of forethought, especially if we have the floor, if we have a captive audience like he did, or as Manish did, कि जो ऑडियंस है आपकी वही है, वो आपके बारे में सुन रहे हैं, तो टाइम लगाइए, सोचिए क्या बोलना है. यू हैव द फ्लोर, you have a captive audience. Don't rush in. That is a way of reducing linguistic struggle, cognitive linguistic struggle, resisting time pressure. That is also part of the pausing behavior. So I think all of these things are ways of reducing struggle, and you basically saw a lot of that in the video as well. Obviously, over time in the process, you get a very effective communicator, very comfortable in his own skin, very confident in what he is saying. Clearly, he's not using any techniques of any type. That's perfectly good. A lot of us, a lot of us stammer, but we stammer in a relatively mild way. मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ आपके साथ, काफी माइल्ड स्टैमरिंग है. तो बीच में थोड़ी सी ठीक बीच में थोड़ी बीच में रुकावट है. मैं अपनी बॉडी को सिखा रहा हूँ कि ये रुकावट ठीक है, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसमें इसमें कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. तो gentle, easy stammering, whether it is voluntary stammering, learning how to do it across multiple situations on over several days, taking your time. And I think the idea of what he's saying, complete openness and surrender to the moment. I mean, Buddhists call this equanimity. So sort of linking it up to that as well. That if you're just open to the experience and not judging it all the time, not evaluating it all the time. The stammering experience, our own stammering experience, if we stop judging it so much, I think we get into a more experimental spaces. And in those experimental spaces, open up opportunities to sort of experience the stammering differently. And I think so. That's all. That's all I got to say. I want to add one more idea to that. That sometimes people ask us, how long am I supposed to do this technique or that technique? How do I know that now I'm ready to move on? I think one criteria could be that if you think that you have practiced enough of the techniques, cancellation, pull out, prolongation, bouncing, then I think you should try whether you can share a joke or not. Because I have seen that a good indicator of your comfort with your speech and your techniques is that you are able to smile and you are able to share a joke. I remember my own days when I was dealing with my stammering and falling short. Then my operating principle was speak as little as possible, as quickly as possible, and just to the point, and then carry on. Because everything else was very risky. But now I'm beginning to see that if you're comfortable with your speech, even if you're stammering, even if you're using techniques not perfectly, if you can share a joke at that time, that is a pretty good indicator that, okay, you've reached a level of comfort. Maybe now you should try something else. I want to ask Manish one thing. Manish, who else was there from Delhi group on this stall, TISA stall? वहां पर माधव थे, हाँ संतोष थे, कुछ हाँ. कुशाग्र थे, मैं थे, अच्छा, मैं क्या एक उन पर्सन। लोगों ने भी माइक लेके बोलने का प्रयास किया? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है. और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा मनीष, ऐसा आपने पिछली बार कब किया था? ठीक ऐसा ही इन ए पब्लिक स्पेस विद ए माइक या विदाउट माइक, टॉकिंग लाइक दिस हाँ, एज यू डिड जस्ट नाउ? मैंने 29th को किया था अभी, 29th अच्छा. और लास्ट। उसके पहले? और उसके पहले?
हाँ, उससे पहले मैंने मतलब मैंने पार्क में भी किया था 2-3 बार। हाँ। हाँ, हाँ। 10 के पिछ, सामने। पिछले 1-2 सालों में ना? हाँ हाँ पिछले जी, एक हाँ दो जी। सालों में। लेकिन आज से 5 साल पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा। 3 साल नहीं पहले नहीं, नहीं किया होगा। तो नहीं 3 साल किया। पहले के मनीष में और आज के मनीष में क्या फर्क आ गया है? क्या अब आप ये चीजें कर रहे हो? मैंने पिछले 2 साल में जितना हाँ। मैं बोला हूँ, उतना पिछली लाइफ में 40 सालों में मैं नहीं बोला हूँ। ये बदलाव क्यों आया, कैसे आया, थोड़ा समझना चाहते हैं हम लोग। ऐसा हाँ जी। क्या हो गया है? अभी पहले मैं बाहर घूमने का भी मुझे शौक नहीं था। दो अच्छा। सालों में मैं साउथ में, गुजरात में और जगह भी घूमने भी गया हूँ विद फैमिली। और तो ये बदलाव और कैसे आया, हम लोग समझना चाहते हैं कि आपकी साइकोलॉजी में एक ऐसा क्या हो गया कि आप ये सब चीजें करने लगे जो कि पहले नहीं करते थे। हाँ, पहले मैं वही अवॉइड करता था। और जैसे कहते हैं ना कि किसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो दूसरा पर्सन जवाब देता टाइम पास। तो पहले टाइम पास होता था कि हाँ बस टाइम निकल जाए। अब ये है कि टाइम पास नहीं, उस टाइम का जितना यूजफुल यूज कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, उतना बेस्ट यूज करता हूँ। पिछले दो 2 साल से मैं टीसा से जुड़ा हूँ। नवंबर 2022 से मैं जुड़ा हूँ टीसा से। तो तब से ही मैं रेगुलर, कई बार जैसे मैंने बस में भी बोला है काफी लोगों के बीच में। ये और बदलाव किस घटना के बाद आया, किस घटना के बाद ये बदलाव आने शुरू हुए? अ, बस कई बार सिचुएशन, मतलब कई बार थोड़ा सा गिल्टी फील हो जाता था। तो आपसे भी पहली बात हुई थी, तो आपने सबसे पहले मुझसे यही पूछा था कि कभी आपको स्टैमरिंग होती है तो क्या महसूस करते हो। तो मैंने बताया था कि मुझे कभी अपसेट हो जाता हूँ या थोड़ी देर के लिए। तो आपने यही कहा था कि गिल्टी क्यों फील करना है। तो उसी बात को फिर मैंने आगे के लिए थोड़ा सा और ज्यादा गहराई से सोचा और जुड़ा टीसा से। तो जो भी पहले जो गलतियां करता था, वो गलतियां थोड़ी थोड़ी कम करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। तो मेन था कि टीसा से जुड़ने के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुई है। तो डायरेक्शन चेंज होने से थोड़ा सा लाइफ में अभी मैंने 1-2 ग्रुप और ज्वाइन किया है। लगभग मैं 4-5 ग्रुप्स ज्वाइन किए अभी अपने लोकल में। जैसे एक बीएनआई करके ग्रुप है, बीएनआई वहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म है, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। वहाँ पे हर एक वीक में प्रेजेंटेशन देनी होती है। एक आरएसएस है, हमारे लोकल में आरएसएस है, हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक हाँ। संघ। हाँ। एक इस्कॉन इस्कॉन ग्रुप है, हाँ। इस्कॉन। और एक पार्क में है। 4-5 अच्छा। ग्रुप मैंने। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि लास्ट मैंने हाँ। गाड़ी सीखने का भी किया है। तो 1 महीने करीब मैंने गाड़ी भी सीखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये थोड़ा चेंज हुआ है। कमाल है, बहुत सारी चीजें कर डाली आपने। फटाफट फटाफट फटाफट। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो मे बी डॉक्टर अमित, वी कैन टॉक अबाउट हाउ टू रीच दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, like Rupert Spira, yeah, like Manish, how to get to that point efficiently. So, Yeah, shall we? I think the idea is to recognize what we're doing first. जैसे आपने, जैसे मनीष ने बोला, मैं गलतियां करता था, अब मैं शायद कम गलतियां करता हूँ। तो जो भी आपके आपके मुताबिक गलती जो है, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने वर्ड क्यों यूज किया, वो किस टाइप की, किस किस चीजें आप गलतियां मान रहे हैं। तो कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? अ, Manish? हाँ। हाँ, सबसे ज्यादा तो जो अभी हमने बात की थी अवॉइडेंस, पिछले मीटिंग्स में। तो पहले अवॉइडेंस ज्यादा होती थी। करता तो अभी भी हूँ, लेकिन पहले के मुकाबले अवॉइडेंस कम होती है।
और सेकेंडली मैंने अभी क्या किया कि अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, ग्रुप थे, सभी को मैंने ये बोल के कम से कम एक दो बार तो बात कर ही ली है कि मैं अभी कुछ धीरे बोलूंगा, टेक्निक का यूज करूंगा। तो एक थोड़ा कंफर्ट जोन भी आया है। पहले जैसे बातचीत कम होती थी, या तो अब क्या है कि सबसे एक एक बार तो बात हो गई है। तो ये प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा जो भी बोलने का मौका मिलता है उसका मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं बातचीत करूं। और एक और मैं सबसे जरूरी जो मैं आजकल कर रहा हूँ, डेली पार्क जाना। तो उसमें मुझे 1 घंटा करीब पार्क में लगता है। और उसमें मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाता। वहां पर जो पार्क में पर्सन घूम रहे होते हैं या बैठे होते हैं उनके पास जाता हूँ। शुरुआत में तो मैं सीनियर लोग ही से बात करता था शुरुआत में, क्योंकि उनसे हम ज्यादा कंफर्ट होते हैं और वो बात भी सुनते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चैलेंजिंग में जो लोग चल रहे हैं, चलते चलते उनसे गुड मॉर्निंग, और दिल्ली में जैसे हम राम राम करके बात शुरुआत कर लेते हैं, राम राम जी। या रास्ते में कोई भी पर्सन मिलता है तो उसे राम राम जी हम बोलते ही है नॉर्मल, गुड मॉर्निंग या राम राम जी। तो उस तरीके से। और शुरुआत में जो घर के जो काम थे, जैसे दूध लाना, सब्जी लाना, तो इस टाइप के पहले मैं ज्यादा करता था। और ऑफिस में भी मैं बोलने वाले काम खुद करता था। लेकिन उसकी वजह से ना मेरा काम काफी सफर हो रहा था, काफी डिले हो रहा था। तो अब मैंने वो थोड़ा सा डेलीगेट कर दिया है कि बोलने वाले काम स्टाफ ही करे। पहले मैं खुद ही करता था बोलने, जैसे नीचे से सामान लाना है मार्केट से, तो मैं खुद ही जाता था सामान लेने। लेकिन अभी 2-4 महीने से मैंने अब वो कम कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा काम काफी डिले हो रहा था। लेकिन मैंने 1-1.5 साल काफी मेहनत की है। हाँ जी। हाँ, तो यही तो, दिस इज द पाथ, राइट? सम वर्जन ऑफ दिस, सम वेरिएशन ऑफ दिस इज द पाथ फॉरवर्ड फॉर फॉर मोस्ट ऑफ अस। कि अगर हम अवॉइडेंस बिहेवियर को अप्रोच बिहेवियर में डाल दें, जैसे कि जो भी मनीष जो बता रहे हैं, दिस इज ऑल अप्रोच बिहेवियर। कि लोगों को बताते हैं कि वो हकलाते हैं, अवॉइडेंस कम करते हैं, ये नहीं कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई है, लेकिन कम हो गई है, बीइंग थॉटफुल अबाउट इट। that is that is a good step. Ultimately you don't want to avoid it all, like, we get there in various ways, and some of us don't get there completely, but that's okay. We keep trying. तो अवॉइडेंस कम करना, लोगों को बताना कि मैं अपनी हकलाहट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी टेक्निक यूज करूँगा, वॉलंटरी स्टैमरिंग करूँगा, ये भी अप्रोच बिहेवियर है। यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू टॉक, जो भी अवसर मिलेगा मैं बोलने का, मैं बोलूँगा। ये चीज़ें जो हैं ये ऑपोजिट हैं, जो हम सारे सारी उम्र करते रहे हैं। ये ऑपोजिट चीज़ें हैं, वो उसको उसके विपरीत हैं। तो वी इफ वी जस्ट डिटर्मिन कि जो व्हाट वी आर डूइंग इज इन वर्किंग फॉर अस एंड वी हैव टू डू द ऑपोजिट, वी वुड बी मूविंग ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन ऑब्वियसली दैट्स डिफिकल्ट टू डू। तो टीसा ज्वाइन करने में, when you know, the collective gives us the power that we don't have as individuals. अगर मनीष मॉल में जाते और इफ ही वाज द ओनली वन टॉकिंग तो और बात होती। लेकिन काफी लोग टीसा में गए, सबने माइक पकड़ के कुछ बोला, तो मनीष also joined the gang. So the collective allows us to do a lot of things that we will not be able to do as individuals. So, taking the help you need, finding the right resources is also very, very helpful. So, I think all of these things are just the standard ways, and some very standard ways of going about the stammering experience in a different way. Changing avoidance into approach is the biggest thing. And giving yourself little tasks, छोटे छोटे projects, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो रेगुलरली हम कर सकें। मॉल में जाके आज बोलना है, इस हफ्ते ये करना है। जैसे कि मनीष ने 4 ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की ज्वाइन
किए हैं। तो दिस इज ऑल वेरी 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 यूजफुल, क्योंकि नाउ ही इज लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पॉजिंग कैसे करनी है, आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, अपनी अपनी बात जो है कैसे समझानी है। ये सब कुछ जो है ये प्रैक्टिस से आएगा। तो अनलेस वी टेक दीज अपॉर्चुनिटीज, we're not going to get on the other side of the stammering experience. So all of these are ways of reducing struggle. These are all ways of reducing struggle. Ultimately 2 साल के बाद, कि अगर हम मनीष का ही उदाहरण लें, तो 2 साल के बाद his body is experiencing stammering very differently than the way he experienced it 2 years ago. Ultimately, it's all these things are bodily experiences. If I put the body through different experiences, it's going to feel different. So is it safe to say that all that which we are promoting, use of techniques, practice of acceptance, joining social groups, becoming more social, reducing avoidance, all this will someday lead towards talking like Rupert Spira. I mean, we will be talking almost like Rupert Spira, almost like so. I mean, it will feel normal, and to the audience also, it will not be very distracting. Is it safe to say that we are moving in So that this is a direction of very easy stammering? this is yeah this is a very good question. I think it's a very good question because I think we need to get a handle on this. क्या होगा कि हम लोगों में कई लोग हैं जिनका स्टैमरिंग पैटर्न रिलेटिवली माइल्ड है। हम ज्यादा हकलाते नहीं हैं। आ, हकलाते हैं, फ्रीक्वेंटली हकलाते हैं, ज्यादा स्ट्रगल के साथ नहीं हकलाते। लेकिन जब हम छुपाते हैं तो सेंसिटिविटी ज्यादा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ज्यादा है, अवॉइड ज्यादा करते हैं, फियर ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा है। तो उसमें जो हकलाहट जो एक्चुअली निकलती है हमारी, तो ज्यादा टेंस हकलाहट निकलती है। तो जो लोग कम हकलाते हैं, दे विल सी ग्रेटर चेंजेस विद ऑल दिस। जो लोग ज्यादा हकलाते हैं, people who have a big stammer, will probably need to do more of the speech motor work. Kyunki there are lots of us who have a very tense stammering pattern. ब्लॉग ज्यादा करते हैं। तो उन उन लोगों के लिए हम तो उन लोगों के लिए उनको ज्यादा काम की जरूरत होगी अपने स्पीच के ऊपर काम करने के लिए इस काम। लेकिन path is the same. You may need to do more of the some of the physical stuff, cancellations, pullouts, all of this stuff. You may need to do more of it to reduce struggle over there. But for a lot of us who don't have a lot of struggle in speech, who create struggle because we are trying to hide it and we are very self-conscious about it, if we just drop all of that stuff, a naturally fluid, forward-moving, less tense, less physically tense pattern is likely to naturally emerge. But that depends on the person, depends upon how entrenched the physical stammer is. So it's going to be different for everybody. लेकिन जैसे मनीष का जो पिछला स्टैमरिंग का पैटर्न हुआ करता था 2 साल पहले, वो शायद ज्यादा टेंस नहीं था, और इसलिए जितना वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं बोलने की, अवॉइडेंस कम करने की, जितना एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं अपने स्पीच के साथ, जितना प्रयोग कर रहे हैं अपनी स्पीच के साथ, ये सब कुछ जो उनको हेल्प कर रहा है, somebody else who has a more tense stammering pattern, we need to do more of it. But the direction is very similar for a lot of us. I think at the end of the day, whether our speech changes radically or very little, uh, what really matters is if we can change our attitude towards our speech, if we can be more self-compassionate, if we can be more forgiving कि चलो मैं हकलाया तो कोई बात नहीं, हकलाया ही मैं और कुछ बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। एंड एक्सेप्टेंस का मतलब शायद यही है कि we accept ourselves as we are without blaming ourselves all the time. Hmm. Can we take a little poll in the session today? Maybe get everybody a chance to talk about what they Yes, yes, think, yes, yes.
what their हाँ, interpretation of acceptance is. Like I yes, want to hear from with Vidya and Dr. Shweta and Ankit कि आपको क्या लगता है? What is your view of acceptance? yes, yes. So in the meantime, I'm developing a poll here, but in the meantime, they can start talking. Vidya, Dr. Shweta, Ankit, Dr. Vijay. I think Dr. Vijay is traveling, so anybody who wants to start. Dr. Amit, can you please repeat your question? Yeah, my question is, what do we mean by acceptance? ठीक, It can mean different things to different people. right. एक्सेप्टेंस को अपनी अपनी स्पीच को अपनी स्टैमिना को स्वीकार करने का क्या माने है? That's the So question. why don't everyone write a text line also in the chat? What is their understanding of acceptance? What do they understand by acceptance? And also, whoever is ready, they can start talking also. So I think everybody can be given some time to talk about what is their understanding of stammering. Who wants to go first? Vidya, are you ready, or Dr. Shweta, do you want to go first? Please raise your hand. Okay, Dr. Shweta, go on. And next will be Vidya. Vidya, if you're free to talk, you can do this after Shweta. Go on, Shweta. Thank you, sir. For me, the acceptance will be as we just saw in Rupert's Spira video, that while speaking, whether stammering or no stammering, it does not make any difference at all. And I would never avoid any situation because of stammering. So that is the idea of acceptance. Thank you. Vidya, you want to go next? What do you understand from acceptance? What is your understanding of acceptance, Vidya? My understanding of acceptance is mostly like having a neutral approach towards stammering. Like if I do not stammer, also I should not feel so happy. If I stammer, also I should not feel so bad about it. So it's just a part of me. It's like any other thing that happens with me. It should be just. I mean, I should feel very comfortable and normal with it. Yeah, that's my. Thank you. Thank you. Dr. Vijay Avare? Uh, am I audible, sir? Yes, you are audible. मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है. हाँ. Regarding acceptance, I have my opinion that is related with my secondaries. I mean, suppose in the future, suppose I stammer in front of some sort of mob or student, then the cognitive secondaries means the thought process in the mind. So it was very tough to, I mean, regulate. Means the thought was continuous in the mind that I got hammer in front of a very important mob, like in front of student. But when I started like accepting it, and when I started to bring some changes in the speech, like pausing and the things, I have got a great relief in that. I mean, my secondaries, कि जो मैं हिंदी में अभी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो होने के बाद में मेरे दिमाग में जो चलता था कि ये क्या हो गया है ना. Okay. थोड़ा एक बात करते हो थोड़ा सा स्टैमर किया तो हाँ. Okay, so what is पे कंबल हो गया तो भी बुरा लगता था. लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है सर. अभी कॉग्निटिव जो है ना अंदर अंदर कॉग्निटिव मतलब brain में
मेरा रोज का एंजॉय बढ़ गया है सर. सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. हाँ, सो मैं ये समझा हूँ कि डॉक्टर विजय बता रहे हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब उनके लिए ये है कि अगर मैं हकलाऊं तो भी मेरे कॉग्निटिव प्रोसेस जो हैं वो चलते रहें, मतलब वो उनमें रुकावट न जैसे कि होता है कि हम हकलाने के बाद वी बिकम कंफ्यूज, वी बिकम एम्बेरस्ड, वी आर नॉट एबल टू थिंक अप नेक्स्ट थिंग टू से, वो सब चीजें ना हो. एम आई राइट डॉक्टर विजय? हाँ तो सर, मतलब जो दिमाग में चलता था ना बाद में, हाँ हाँ सेम फियर, हाँ, वो ना एंजाइटी, चले. मतलब हाँ बाद में जो हाँ, हकलाइट के बाद वाली प्रोसेस वो कम हो. और इससे वो फिर ना सर ठीक. हमारी हमारी मुझे कोई अगर चैलेंजिंग काम करना है तो उससे डेयरिंग मिलता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना, हम कुछ ठीक मैनेज कर सकते हैं. ये बहुत ठीक बड़ी बात होती है. ठीक लगता है ठीक कि ये बहुत ठीक मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है सर. ठीक. मतलब स्टैमरिंग जब हो तो उसके बाद बॉडी और माइंड रिएक्ट ना करें, जो कर रहे थे वो करते रहे, हम बोल रहे हैं तो हम बोलते रहें, हम जैसे भी बोल रहे हैं वैसे हम बोलते रहें, हमारा वो जो इमीडिएट जो रिएक्शन होता है, शेम, एम्बेरसमेंट, कंफ्यूजन, वो सब ना हो बॉडी और माइंड के लेवल पे. थैंक यू डॉक्टर विजय, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट मनीष. हाँ मनीष बताइए आप. मनीष के बाद मैं अंकित को इनवाइट करूंगा. बोलिए मनीष. हाँ, आज जैसे मैं यहाँ पर क्रिसमस का प्रोग्राम था, तो और भी स्पेशल नीड्स पर्सन थे, व्हील चेयर पर थे या थे, तो और भी स्टॉल्स पर हम गए. तो एक्सेप्टेंस का मैंने हर एक स्टॉल पर एक्सेप्टेंस देखा. चाहे चाहे मतलब ब्लाइंड पर्सन है या व्हील चेयर पर है, तो हर एक टीम से मेरी बात हुई, मैक्सिमम टीम से. तो एक्सेप्टेंस, चाहे हम कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को, तो हम जो लाइफ है उसको अच्छे से हम एंजॉय कर पाते हैं. और यदि हम कुछ भी कमी है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी केस में. ये सिर्फ स्टैमरिंग की बात नहीं है, किसी भी केस में जो भी कमियां हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक्सेप्टेंस हर एक फील्ड में जरूरी है. तो अभी और जैसा कि मैंने समझा है कि एक्सेप्टेंस स्टैमरिंग को मैनेज करने के लिए फर्स्ट स्टेप है. जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझ में ये कमी है. जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं कभी कभी मुझे स्टैमरिंग होती है, और कभी कभी मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ. तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे स्टैमरिंग कभी कभी होती है, लेकिन होती है, तो इसका मतलब स्टैमरिंग है. सेम ही एग्जांपल, आज सुबह की बात है. मेरे फादर को सांस की तकलीफ है. तो उन्होंने कहा कि कभी कभी तो सांस मुझे ज्यादा हो जाते हैं, और कभी कभी मैं फील करता हूँ कि मुझे सांस की तकलीफ ठीक है, ज्यादा नहीं है. तो मैंने इसी एग्जाम्पल पर उनको बोला कि इसका मतलब सांस की तकलीफ है, कभी कभी भी होती है, कभी कभी आपको लगता है कि ज्यादा है, फिर भी इसका कह सकते हैं कि तभी तो हम कहते हैं कि ब्रीदिंग इशू है. तो वही स्टैमरिंग के ऊपर है कि हम मैं कभी कभी बहुत अच्छा बोल लेता हूँ बच्चों के आगे या किसी फ्रेंड सर्कल में, लेकिन कभी सीनियर्स के आगे या अजनबियों के आगे स्टैमरिंग ज्यादा हो जाती है. तो इसका मतलब कि हम ये छुपाने की कोशिश ना करें कि मैं ठीक बोल लेता हूँ. मतलब ये मानना है कि हाँ स्टैमरिंग है. तो जब हम ये मानेंगे स्टैमरिंग है, उसे एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, और लोगों के सामने भी तभी हम उसके टेक्निक का यूज कर पाएंगे, जब हम मानेंगे कि मुझे स्टैमरिंग है. लेकिन अभी भी मैं 100% तो नहीं कर पाया हूँ एक्सेप्ट. अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर मुझे भी अभी भी अवॉइड करता ही हूँ. मतलब सब कह रहे थे कि 80% जगह एक्सेप्ट हो गई है, 20-30% अभी भी बाकी है. हाँ जी.
Thank you, Manish. Thank you very much. Dr. Amit, you want to respond to things which Manish said, or shall I invite Ankit? I want to make a quick comment because I'll lose it if I don't say it, and it's the right time to say it. I think what Manish is pointing out is a very valid point. Acceptance is actually a very challenging concept in the stammering community, and it is a stammering compared to all the other groups that have special needs. Say somebody who's blind, they don't have a choice but to accept because it's a permanent condition. It shows up consistently. You are never non-blind. You're always blind. But we who stammer, I think if I could say it in a slightly poetic way, we are actually dual citizens. We inhabit the fluent world. We have the capacity for generating fluent speech, but we also have instability in reliably producing fluent speech. It's this variability in stammering that makes stammering identity a very inherently complicated concept because it's hard to take a side. And this is where what Manish is saying is so valuable कि मैं एक जगह पे कम हकलाता हूँ, एक जगह पे ज्यादा हकलाता हूँ, लेकिन मैं हकलाता हूँ। मुझको ये मानना होगा कि हम लोगों को स्वीकार करना, अपनी हकलाहट स्वीकार करना चैलेंजिंग लगता है। नंबर वन, बिकॉज stammering is a very socially consequential event. That's one reason. It can, it leads to, we have lots of experiences, traumatic experiences in the body where it has led to uh, uh, no, quite adverse impact. So all of that trauma is registered somewhere in the body, whether we know it or not, whether we realize it or not. So that's one reason why it's hard. And secondly, because a lot of us lead lives of avoidance where we pass off as fluent, where we try to hide it. Because of its variable nature, it's possible to hide it. So I think the idea of accepting yourself is a little bit more challenging, a lot more challenging when you stammer versus if you have something that is a more permanent, visible condition like blindness or anything else like that. The other thing I want to comment on very quickly is what Vidya said, and I think Dr. Shweta said something similar, that the idea of being less emotionally reactive, being more emotionally neutral, um, right? That is a somatic sensation that you will feel in your body. When we are less emotionally reactive, when we're feeling less encumbered, when we're feeling less burdened by the stammer, our bodies will know it. Um, uh, to me, if I have to share my own notion of what acceptance is that, hammering is going to have an enduring presence in my body for as long as I live. I'm going to be a person who stammers. I might stammer less, I might stammer more. I might be able to manage it in one situation, less manage it in another situation, but I'm never going to be a not like it's chances of me not being a person who stammers suddenly becoming a not person, that chance is very small. So to me, acceptance is that stammering has a right to show up. It has a right to show up in a social space. हक है, हमारी हकलाहट का हक है कि that it will show up. It has a right to be present. Um, that's the if I totally embrace that idea, if I totally get behind that idea, my emotional reactivity will automatically come down because my expectations have changed. I expect that I will be stammering every now and then, sometimes less, sometimes more. I may not like the fact that I stammer a lot in one situation, so I may be able to manage it a little bit better in that situation. So it's going to be up and down. But stammering will be part of my speech. It's as simple as that.
I have as a person who stammers, I have a right to stammer, and therefore the stammering has the right to show up in a social conversation. So that's my take on it. Can we go to Ankit? We haven't heard Yeah, from him. Ankit, please go ahead and share your thoughts. Yeah, sure. So, like, I can read from the message I wrote. So, acceptance for me would actually be a very slow process, starting from a relaxed environment rather than directly jumping into scary situations and like announcing on a loudspeaker that I stammer and start stammering profusely. By relaxed environment, I mean that people whom you are familiar with, and especially like with people like whom you are happy with. So in that kind of like scenario, acceptance would come more sort of naturally. So the thing is that when you try to force something, your mind actually works in a negative direction. So in a relaxed environment, instead of forcing it, you can like nudge your mind or encourage it to be like to have more acceptance of the stammering, right? And when you like start doing this in the relaxed environment, right, the acceptance will get eventually built up day after day. And then like I will be able to accept more of it in a more broader social setup where even normal people are less relaxed. Even they sweat in scary situations. So and like ultimately like we need to first accept that someday I will be able to accept it more, but only when I start very small on acceptance, like start in a very relaxed environment, in an environment which I have happy with. Yeah, that's an excellent point, Ankit. I think what I'm taking away from what you're saying is it's like any other muscle you build. Yep. Uh, you build that muscle through consistent, regular workouts. Like if you take a gym analogy, if you're going to the gym and lifting weights, it's going to be hard for you to lift a 25-pound weight if you've never lifted weights. But if you do it regularly, start with 5, go up to 8, go up to 10, over time, your capacity will increase. So even as the demands are increasing, even as far as the environment is getting more risky, more competitive, you feel your capacities are matching the demands. So I think the idea of thinking about acceptance as a long-term process rather than and it's also a lot of slip and slide. It's a lot of slip and slide. But the way I think about my speech, the way I accept my speech now, very different from the way I was in my 20s. So a lot of this is age related. So I think you get older, you care less about what people think, hopefully. That's helpful. Being less, being less, feeling less encumbered by what people are thinking of you because you've like reached a certain stage in your life, your career, or whatever it is. All these things will play into your level of acceptance. Yeah, definitely. But I just want to add one more thing, that all these are very human processes. Unlike mechanical processes like recharging a phone. When you recharge your phone, in half an hour, maybe 1 hour, it shows 100%. But in our case, I mean, I am 66, born in 1958. I have accepted my stammering, but there are a couple of other things in my couple. There are more there are many more things in my life which I have not been able to accept it even now. And Mhm. and sometimes I think that maybe on my deathbed, I will be able to forgive certain people, or I will be able to come to terms with certain experiences in my life. So Mhm. it is not that you start join TISA and in 1 year your acceptance, like your battery charge, is showing 100%. Mhm. It's not like charging battery. These are very human processes. They take, and as Dr. Amit said, slip and slide is part of this human Yeah, process. Sometime yeah. you will go up, sometime you'll slide back, sometime you'll go up, sometime you'll slide back. And this is something which you can do at your own pace. I mean, you cannot sort of you cannot use a high ampere charger and charge your phone in 10 minutes instead of 1 hour. You can do that with phone, but you can't do that with human beings. So I cannot push your process of acceptance. You can't push my acceptance. It will happen on its own.
The only thing which we are discussing here, that is acceptance a good thing or bad thing? Should we run away from it or should we move towards it? And if we do, what are the pros and cons? What do we gain by it? So that's all thing. For example, I came across a very funny line today. Somebody said, if you're in traffic jam, acceptance doesn't mean that you love traffic jam. You don't say, I love traffic jam. It gives me so much time to catch up on my WhatsApp messages. I can listen to music. I love traffic jam. No, you don't love it, but you but you stop hating it. You stop you stop cursing it. You stop abusing it कि अरे मैं कहाँ फंस गया, ये बहुत बुरी बात है, देश कहाँ हो रहा है, ये this world, this country is going to the dogs, there's every day this traffic jam. You don't waste your time in that kind of negativity, which is not really serving any purpose. It's only making you more and more angry. That's the only thing it is doing. But instead of that, if you say, okay, I'm stuck in a traffic jam, I can't do anything else, so maybe I can put on my Bluetooth headset and listen to some music, or answer a couple of WhatsApp messages, or make one of those phone calls. So that's all acceptance is all about. It's not about taking a moralistic stand that I must be a very evil person if I can't accept my stammering. We are not saying that. And that is not the way of going about it also. So thank you, Ankit. Thank you so much for sharing your thoughts. Because if you can't share your thoughts here, where else can you do that? So your thoughts are most welcome. And I will never ask anybody to to climb the roof and shout from there. "मैं हक लाता हूं." No. We are supposed to do it only, to the level we are comfortable with at a given point. And then our comfort zone expands gradually. And I mean, looking at all of us, you can see all of us are pretty senior people. We have taken our time to do it. I took like 44 years. Only at the age of 44, I decided to start thinking about it, talking about it. Thank you. Okay, so I think Vidya wanted to share something. I just want to say one quick thing here to add to what you're saying, Dr. Sachin. I think what you said is, deeply resonant in another way. In speech therapy now, not uniformly in the West, but particularly in the US and in England too, there is a lot of emphasis on looking at stammering from a neurodiversity lens. And this notion always comes up that it's okay to stammer. Well, what does that mean, right? It means, just like acceptance means different things to different people, it's okay to stammer also has to be unpacked, and it means different things to different people. From a change perspective, let's say from a change through speech therapy perspective, is it the beginning stage or is it the end stage, right? I mean, is it a place to begin or is it a place to end? So all these questions actually come up. And I think the notion of what you're saying about being stuck in a traffic jam, you don't have to love the fact that you're stuck in a traffic jam. In the same way, you don't have to love the fact that you're a person who stammers. Stammering does create interference. All neurodiversity or all neurodiverse states. Just because something is a neurodiverse state doesn't mean it's not going to create interference in your life, right? The question is, how are you managing the interference? So a lot of us, myself included, feel that there is this very big push in the West towards body positivity, which some of us receive as being a little bit toxic in nature. You don't have to love every aspect about yourself, right? You don't have to be in love with every little glitch or every little flaw you have, but you can be okay with it. Kind of the same thing as you're saying with being stuck in a traffic jam. I don't have to love the fact that I'm in a traffic jam, but I can be okay with it. I can use the time in a productive way, which goes back to the notion of emotional neutrality. If you're just emotionally a bit more neutral towards the experience, you create space for a lot of other things that you have not been able to do. If you're cursing yourself being in a traffic jam and cursing the traffic being in a traffic jam, it's kind of like the second arrow. What Buddhists talk about it being a second arrow. The first one is the pains. So the second one that I inflict on myself is the suffering. So it's like that part is more in my control. So
a lot of these are related concepts, but it just occurred to me that it links with this notion of like what does it mean to say it's okay to stammer. The point is we are tolerating it, reducing the interference, okay with it, and over time maybe you feel more positive about yourself. This is kind of what you're saying. Maybe Ankit isn't there yet, but over time he can get there a little bit more. Maybe Manish is there a little bit more. Maybe some people are there. We all are individual journeys. And so I think being mindful of that, being respectful of that is also very, very important. This is what Manish is saying. Being different is okay. Yeah, it makes a lot of sense. Yeah. Yes. Vidya, you wanted to add something, or anybody? Before we conclude, we would like to have anybody who wants to say something, add something. I would just like to tell, like, few days before I went to meet, a group of friends, but I was feeling so, uncomfortable at that time, because not because of my stammering, because of my hearing. I couldn't hear half of the conversation that was happening. So at that time, I have to always tell, like, sit here, stand there, talk loudly, or come near. Okay, you can face me. So all those things. Uh, but if I have a one-on-one conversation in a room, then the entire scene changes. So it's so hard to put me. I mean, when I don't know. I don't remember who was saying that, like whether to be in this. Someday we stammer more and someday we stammer less. So I had a very similar feeling with my hearing also at that time. So yeah, just wanted to share that. Yeah. So it's like I can understand the in between stage of, you know, how to, identify myself with that place. Yeah. I think very often in TISA we make the mistake of looking at acceptance as a technique meant for dealing with the stammering. But actually, if you think about it, acceptance is more like a like a lifestyle choice, or like a philosophy of life itself. It's more like uh, a a philosophy for life itself. If if something happens to me, I'm going to abuse the world and everybody in it. Versus if something happens to me, I'll stop and think, what has happened? What are the implications? I like to give one more example, and it has come from real life example. When I was learning to drive, I used to be very anxious that I'm driving, nothing bad should happen. I must not hit a dog, and I must not have a flat tire. As long as I'm inside the car, everything should work perfectly. So I was driving somewhere, and somebody was sitting in the back seat, and the person said, I hear a funny noise from this side. You better stop and check. I think you have got a flat tire, back right side. I said, no, no, because my mind didn't want to believe it, because my mind said, it's a big trouble. It better not be a flat tire. And since the car was running, so I just kept on driving. I kept on, and this friend kept on saying, why don't you stop and check? I said, no, no, I'm quite sure everything is okay. Everything is feeling fine. So I continued driving another 10 kilometers. So that is the kind of attitude of denial or resistance. You don't want to stop and get out of the car and actually check, I've got a flat tire or not, or what is to be done with it. Instead of dealing with the problem, you're trying to deny it. So non-acceptance is like this. Non-acceptance is denial or resistance. But of course, Yeah, as we Ankit often said,
But of course, as Ankit said, you can go to the other extreme. You could go to the other extreme also. So that is We possible. often Back we to Amit. often we often we often talk about acceptance as being the last part of the grief cycle, right? So if you look at the grief cycle, people who are going through the grieving process, what you're saying about denial is one stage of the grieving process. Yes. Anger is another way of dealing with the grief process. And just like you have various stages in the grief process, and you can skip a stage, you can go back to a previous stage, you can go ebb and flow, wax and wane, high and low, slip and slide. We do a very similar thing with acceptance as well. It's like there's a lot in between until a lot of us get to that point. And some of us get to that point in some situation, partially, completely, somewhere in between. So there's a lot of latitude in that individual variation about how we grapple with it. But I think the part that was resonating with what you were saying in terms of having a flat is like, okay, yeah, we've all been in denial one way or the other at various stages in our life regarding even us each. But that is one part of the grief cycle as well. Yeah. Okay, so before we end, does anyone want to summarize the entire discussion in one line? Ankit, you want to try your hand? So like everyone will have their own journey of acceptance. Good. Okay, guys, thank you very much